Are you looking for relevant healthcare information? Log on to Medicircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to Medicircle. मेडिसर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए लगातार ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको अवेयर करना और इसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज व्यूज को आपके अटेंशन में लाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडिसर्कल। Today on our AIDS awareness series, we have Dr. Sudhanshu Deshmukh with us. Dr. Sudhanshu Deshmukh is an HIV specialist since 2007. आपने अपना MBBS 2002 में from MIMSR Medical College लतूर से किया और आपकी फेलोशिप इन HIV मेडिसिन आपने YRG केयर चेन्नई और ब्राउन यूनिवर्सिटी USA 2007 में ही आपने कंप्लीट किया है। You are a consulting chest and HIV physician in Deshmukh Hospital. You have implemented the PPT-CT program in Parbhani and surrounding districts in association with Prayas Foundation from 2008 to 2012. He has been arranging exhibitions and delivering speeches on HIV awareness for various educational institutions, NSS camps of various universities, Parbhani Police and Home Guards. It is our privilege to welcome him today to Medicircle. Hello, Dr. Sudhanshu. How are you? Hi, fine, very fine. And that's a privilege to get invited here also for me too. Our pleasure, sir, completely. तो जल्दी से प्रश्न पहला पूछ लेती हूँ आपसे कि मेरा पहला प्रश्न आपसे है डॉक्टर साहब कि एक व्यक्ति एड्स से कैसे इफेक्ट होता है? The very first thing मैं डिफरेंशिएट करूंगा पहले कि एड्स एंड HIV. These are two usually we synonymously बोलते हैं, मगर AIDS, that is the full form, is acquired immunodeficiency syndrome. Acquired means something that is coming from outside. Whatever the reason, जो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति इम्यूनिटी जो कम करती है, वो इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपको जो अलग अलग किस्म की बीमारियां होती है, इन सबका जो ग्रुप किया जाए तो इसको एड्स कहा जाएगा, acquired immunodeficiency syndrome. The very basic cause of this is a virus, HIV. So what is that is we call human immunodeficiency virus. इंसानों में रोग प्रतिकार शक्ति कम करने वाला विषाणु. There are two HIV viruses, HIV1 and HIV2. So in India में HIV1 is the most rampant virus. HIV2 is seen most commonly in northeastern states, which is less hazardous kind of virus. So most of the things are only for this things there is a little bit difference, some little bit difference in the management. But अगर दोनों एक siblings हम दोनों भाई कह सकते हैं उन्हें. Okay, so coming to how the people get HIV acquired, before to go to AIDS, somebody needs to acquire HIV infection. Considering Indian scenario, the commonest cause of acquiring HIV is unprotected sexual intercourse with some HIV infected person. किसी भी HIV बाधित व्यक्ति से unprotected intercourse होने से HIV का ट्रांसमिशन होता है. That could be between a man and a woman, or that could be men having sex with men, gays what we call women. That could be a thing. The very much possible. The reason for this is since centuries people have been willing for some extra affairs and all those kinds of things. That's why many people have extra marital sexual affairs. जी. दूसरी बात अगर हम जैसे बोले कि food, water and residence, that is the initial
what is basic needs, but as per human medical science, sex is a basic need. And many times long distance truck drivers जो होते हैं या many people जो employment के लिए कहीं बाहर होते हैं, दिल्ली में आपके यहाँ पे भी बहुत सारे आते हैं, हमारे मुंबई में वगैरह other states. So those people for seeking sexual pleasure, that's they indulge in this kind of higher sexual behavior. And they acquire it and they transmit it to their families when they go home. This is kind of, so this was the big driving factor for HIV infection in India. Nowadays, there is a big, again, we see the increase in high risk sexual behavior, like premarital affairs during the colleges, universities, at workplaces. So this is increasing now day by day. Previously इसके बारे में बहुत अवेयरनेस एक्टिविटीज आपने देखे होंगे टीवी पे, आईसीस होते थे कि यू शुड अवॉइड दिस थिंग्स. आपने ये भी एड्स देखे होंगे कि बलबीर पाशा को एड्स होगा क्या वगैरह, लाइक दिस थिंग्स. तो उस पे का जो फोकस था वो फोकस अभी कम हुआ है. यू डोंट सी दिस एड्स. सो ये जो अवेयरनेस लोगों में क्रिएट होता किया गया था, वो अवेयरनेस ये जो नई न्यू जनरेशन है, दोज हु आर इन देयर 20s, दे आर नॉट हैविंग दैट अवेयरनेस अबाउट दिस एचआईवी नाउअडेज. जी बिल्कुल, थोड़ा केयरलेस हो रही है हमारी नई जनरेशन, जो थोड़ा केयरलेस हो रही है और उनको लगातार जो शादी से पहले के संबंध हो या शादी के बाद, they have become more active at work, extramarital, whatever kind of. So this is increasing day by day. Second thing जो comes very basic thing is second commonest is through blood and blood products. Usually पहले commercial blood donors होते थे जो, and there were not so many testing facilities available. But nowadays, before giving blood transfusions or for like test tube babies में sperms donate किए जाते हैं, या like for organ transplant, we check thoroughly. But still, in case of HIV, there is a thing called window period. If I am tested today, I am getting tested myself, I am getting tested negative, and I have got already acquired the infection. But it takes minimum 2 weeks with the latest the things जो भी टेस्ट है, उससे लेके 2 weeks या 3 weeks to 3 months रिपोर्ट false negative होती है. Despite of having infection, the report you may get a negative report. There with new technologies, this is reduced a lot, certainly, no doubt about it. But simultaneously, with increasing, जो मैंने बोला कि यंग जनरेशन बिगड़ रही है हमारी, so there is increasing injecting drug use. People, there is ऐसे ग्रुप्स होते हैं, you have just seen उड़ता पंजाब, like एक सिरिंज भरी जाती है, उसमें ड्रग होता है, and they start sharing. एक ने इंजेक्शन लगा दी, अगर उसको एचआईवी है वो उसमें मिक्स हो गया, वो इंजेक्शन देता है, पहले वेन में डालता है, थोड़ा सक करके देखता है क्या वेन में इन है. सो इफ देयर इज वायरस दैट गेट्स मिक्स्ड इन दैट ड्रग, सो ही शेयर्स विद द अदर्स एंड द वायरस स्प्रेड्स लाइक दैट. सो दिस इज अ now increasing a new menace, new thing, particularly in Northeast. That is the commonest transmission is by injecting drug use in Northeast, particularly Myanmar and those bordering states. There you will find a lot of IDUs. Then comes the only thing from an HIV infected parent to a baby. Actually, globally, the people call from mother to child, but actually, that was Sushma Swaraj ji. She coined the term parent to child because father is equally important. He might be the person. He might have infected the woman. Yes, he may infect the lady,
and she may pass it on to the child. Right. So during before the delivery, during बच्चा पेट में है, womb, that time, or after birth, during birth, yeah, after birth through breastfeeding. So this way HIV can transfer from a person to another person. This is the way how it spreads. Coming to AIDS, AIDS is a very late stage. The WHO has classified HIV infection into 4 stages. First is the asymptomatic stage, or you may just get some minor viral fever like infections. Then comes a period of prolonged asymptomatic. सामने आपके बाजू बाजू में कोई भी बंदा है, कोई बंदी है, उसको देख के आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसको कोई किस्म की बीमारी HIV है. यू जस्ट कांट, एक आदमी को देख के आपको ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि इसको है या नहीं. यू जस्ट, अनलेस यू टेस्ट इट, यू डोंट नो. देन व्हेन इट प्रोग्रेसेस फर्दर, like your body immunity goes down. HIV attacks white blood cells, CD4 blood cells. These are the main your defense power against all kind of infections. Just मैं मेरे patients को जैसे मैं समझाता हूँ कि how does it happen. HIV एक समझो आपका जो गांव भी है जहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए there is some तो एक this is a police, like a police force of the city. there is आपको police force protection के लिए. So CD4 is a protection force of your body. आपके सिटी का पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स कम होते जाएगा तो बड़े चोर आराम से चोरी करना शुरू कर देंगे, फिर और कम हो जाएगा, फिर मजोले चालू हो जाएंगे, फिर नीचे वाले पॉकेट मार वो भी बड़े चोर, वो भी दादा लोग बन जाएंगे. So same thing, CD4 starts when it starts dropping. See, normal range is say 500 to 1500. उसके ऊपर है तो 500 के you most of the times you won't get anything. 500 to 350. Now usually जो infections किसी को भी होते हैं, ये infections की frequency बढ़ने लगती है. Then if you are not, no one suspects even this kind of things. Then it reduces, goes below to 350 to 200, stage 3. Then more common, usually some rare kind of infections, severe grade of pneumonias, herpes होना होता है, मुंह में छाले आने होते हैं, जो रूटीनली हील होना जो नॉर्मल होता है उससे ज्यादा टाइम लेना होता है, ट्यूबरकुलोसिस होना होता है. ये जो कोई इन्फेक्शन, सर्टेन सेट्स ऑफ बॉडी इन्फेक्शन है, दो you start. Many times these infections are seen in non-HIV people also. So here also, unless the doctor thinks high suspicion, you don't think of HIV. And patient gradually patient is losing weight. So now here starts suspicion. Then comes unexplained diarrheas and some kind of neurological illnesses. Those are which are not seen in otherwise healthy people. When the CD4 drops to 200, drops to 100, to 50, these are called AIDS defining illnesses. So when these kind of infections develop, we call that person has developed AIDS. Is it the end of life? No. It is very much reversible with proper diagnosis, proper timely initiating ART, antiretroviral therapy. Previously there were various criteria, but nowadays test and treat. If the person is tested positive, straight away start on treatment. So with this, all these things, all these illnesses have reduced people's quality of life has developed tremendously. In some my medical lectures होते हैं हमारे CMEs, I title it HIV 30 years of HIV. Now I will say 35 years of HIV, from death sentence to lifetime imprisonment. You will not, if you are taking medicines properly, if you are taking all kind of precautions,
you are not having any kind of addictions like alcohol, tobacco, and managing other illnesses properly, आप अपने clinician से मिलके control करते हैं, you will be having a chronic manageable disease like diabetes, heart disease is more, nothing more than that. Even those diseases are even worse than HIV. You have so many lifestyle restrictions there. ये मत खाओ, वो मत खाओ, गोलियां इतनी ज्यादा खाओ. If by God's grace nowadays HIV for there is one single pill, nothing else. So this is how people develop AIDS, but the quality is much different nowadays. That's वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, और आपने काफी डिटेल में ये सारा आंसर हमें समझाया, खास करके ऐसे उदाहरण आपने दिए जो कि साधारण व्यक्ति को जरूर, जो उनको डाउट होते हैं उस समय उनको होता है, और उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया सर. मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि एड्स से इफेक्ट ना होने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? गोइंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, उसी में सब चीजें हैं. कॉमनेस्ट कॉज इज अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस. Nowadays, it's very much common, as I already said, having multiple sexual relationships, live-in relationships, premarital relationships, extramarital relationships. But first and most thing, okay, with the changing culture, it's bound to happen. It is going to increase day by day. But first thing, be loyal. Whosoever is your partner that time, be loyal to him or her. Not to have multiple partners. Abstinence, as much as possible, abstain from unsafe sex. 100% use of condom. That could be a male condom, that could be a female condom. Because that is the thing for sure that is going to protect you 99.9% protection against acquiring HIV. And even though if you feel that you accidentally आपका intercourse एखादा HIV infected person से हो चुका है, okay, let it be. अगर वो person उसको knowingly also, because I will come to it later. So you have medications, you approach a person, a clinician who knows these things, they will give you post-exposure prophylaxis, a tablet. They will do some, first test you if you are really positive or negative. If you are negative, वो आपको एक post-exposure prophylaxis के लिए tablets चालू कर देंगे. You have to take it for a month, and that way you will be protected. So this way you can safeguard yourself from this sexual route of transmission. For those, the best thing is for drug users. The second thing comes, and blood things. This is transmission through blood. So blood transmission through blood is almost negligible, I would say, but still considering window period, that possibility lies there, and you should get blood whenever आपको किसी को blood देना है, या मुझे लेना कोई है तो I should opt for a reputed blood bank, जहाँ पे some advanced techniques होते हैं जिनमें आपको ये period 2 weeks तक भी कम हो सकता है. So you opt for those things. And अगर कोई ड्रग यूजर है, ideally the best thing is to give it up, because that उस पे solution आज गवर्नमेंट का जो है एक ही है, say no to drugs. If you really want, if you really love your life, your loved ones, then you should say no to drugs. That is so ultimate solution. नशा पसंद है, and that nasha, I'm just not saying these kinds of drugs. Nasha that comes, that is alcohol also. Alcohol increases sexual desire, so your high risk behavior increases. So say no to alcohol also. And like injecting drugs, government is having a buprenorphine substitution program. आपको जो morphine वगैरह जो injections लिए जाते हैं उसके जगह पे कोई tablets आपको government officially provide करता है इनको. De-addiction programs. Enroll yourself in de-addiction programs. And
as much as possible stay away from needle, from this injecting drugs. नहीं है तो simultaneously don't exchange needle. खुद की नीडल खुद के पास में रखो, नीडल चेंज करवा लो, मगर मेरा ये एडवाइस लेके नीडल का पैक लेके मत घूमो पहले दिन. फर्स्ट द एडवाइस ideally we should not be advising them at all to use it. यही हमें बोलना है कि आपको यूज नहीं करना चाहिए, नहीं करना है. and stay away if from at all you have a fear of AIDS, then you should stay away from it completely. That would be our advice. Now, yeah. Then many times what happens now? The third people point. come to us. The people come to us that we are married. Either of us is HIV positive and the other is HIV negative, and we want baby of ours baby. We don't want to go for, we can't afford test tube baby. We don't want to adopt a child. So what? Even so, these cases मैंने जैसे पहले बोला कि आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एडवाइस किया जा सकता है. So in such cases, we can advise them pre-exposure prophylaxis. So you are started on the medicine that you have to take daily, and with this you can take have proper channel. You can take chance. But in particularly if you want to have a baby, I advise them to consult their obstetrician. Of menstrual period, only 4 days are fertile period, and usually nowadays ovulation detection strips are available in the market, like pregnancy test kits. These kits are there. You can check in the urine, is there any ovulation. So मैं उनको बोलता हूँ कि planned intercourse on these 4 days only, and otherwise abstain, or you use protection. You use condoms. So with this, you can have your own baby without getting the other partner infected. So this is very much nowadays licensed thing worldwide, and now in India also. NACO has regulated it now. And even if the lady she get already, if she is on known HIV positive, she gets pregnant. No need not worry. If we check her viral load, that is the number of viruses detectable in blood. कितने 1 ml ब्लड में HIV viruses कितने थे? हर एक 2-3 मशीन के कुछ डिटेक्शन लिमिट्स होती है. सो उसकी जो लोअर लिमिट ऑफ डिटेक्शन है उसके नीचे है, तो विच इज वर्किंग वेल. एंड अनडिटेक्टेड मीन्स अनइंफेक्टेबल. वी यूजुअली कंसिडर देम पोटेंशियली नॉन इन्फेक्शियस. सो वैसे भी उसके बच्चों को होने के चांसेस नहीं होते हैं. प्रॉब्लम कम्स व्हेन usually a newly married lady or sometime she accidentally, वो जब आती है एंटीनेटल चेकअप में वगैरह, उसमें टेस्ट किया जाता है HIV टेस्टिंग, and she turns out to be positive. Yes, okay, no problem. We start her straight away on treatment. Previously डिलीवरी के टाइम पे ही एक आधा टैबलेट देना, फिर उसमें बाद में कुछ चेंज हुए. बट नाउअडेज स्ट्रेट अवे शी स्टार्टेड ऑन ट्रीटमेंट, एंड विद दिस the chances of acquiring infection becomes almost 1%. So such a low thing. Then usually sometimes happens कि हेल्थ केयर वर्कर्स में कोई इंजेक्शन दे, पेशेंट को ट्रीटमेंट में है, मेरा हेल्थ केयर नर्सिंग स्टाफ है या हाउसकीपिंग स्टाफ में किसी को कोई नीडल प्रिक हो जाए, as such the chance of infection is very low, 0.03%. But yes, okay, still it is a considerable thing. We can give here also post exposure prophylaxis, so that way we can have stay safe, we can prevent it. And usually for babies in western countries वो बोलते हैं कि don't breastfeed, give formula feed. But in Indian context, we don't advise that. We advise mother's milk only for 6 months total, at least pure breastfeeding. क्योंकि अपने आप पे nutrition, hygiene, these are very much big problems. आप अगर still many places people advise to give formula feeds. Particularly corporate things वगैरह जो, and जो rich people वगैरह, उनके लिए
किया जाता है एडवाइस, बट द नॉट एवर द इम्यूनिटी, मदर का जो मिल्क है बेबी के लिए, जस्ट नॉट फूड, उसमें से आपको कई सारी बीमारियों के अगेंस्ट आपको एंटीबॉडीज जाती है, तो they keep on protecting you. That's a very good thing and should give It's like a exclusive medicine. breast milk. Yeah, it's a medicine for the That- child. I won't say medicine, that's अमृत. Amrit, yes, that's the अमृत है perfect वो, word. मेडिसिन नहीं है वो, अमृत है। सही आप बात है। आप जैसे देखिए, जो अदरवाइज छोड़ दीजिए HIV, अगर किसी बच्चों को जिसको मदर में लैक्टेशन फेलियर है, तो उसके बेबी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है जी, आप कुछ भी दो, ये फॉर्मूला फिर मार्केट में मिलने वाले, बिल्कुल। आई वोंट टेक एनी ब्रांड नेम, मगर उसकी ग्रोथ उतनी प्रॉपरली नहीं होती है। बहुत सारे बोलते नहीं ये बच्चा उसका हुआ नहीं, उसको उसकी माँ का दूध मिला नहीं वगैरह, उस वजह से वो कमजोर है। दीज आर द थिंग्स, वो अमृत है बच्चे के लिए। सो दिस इज द थिंग। सो बट इट हैज टू बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, नो मिक्स फीडिंग, एक पानी की बूंद भी नहीं डालनी है 6 months, उसके बाद में यू स्टार्ट विनिंग लाइक अदर थिंग्स, क्योंकि अगर आप मिक्सिंग करोगे एंड मदर की ब्रेस्ट मिल्क में अगर वायरस है, तो ये मिक्सिंग की वजह से जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा जो होता है, उसका इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग दैट गेट्स डैमेज एंड वायरस गेट्स चांस टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम। सो नो मिक्स फीडिंग, प्योर ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग। सो दिस वे वी कैन safeguard ourselves from acquiring HIV. राइट सर, इसके बाद एक ही प्रश्न है कि ऐसे कौन से मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, या ये जो दवाइयां जो लगातार एड्स के लिए चलती हैं, क्या इनके कोई एडवर्स इफेक्ट्स या रिएक्शंस हो सकते हैं पेशेंट्स जो लाइफ लॉन्ग ये दवाइयां ले रहे हैं? Certainly not. ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिसको कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, और वो किसको हो वो किसी के सिर पे लिखा हुआ नहीं होता है कि क्या होगा। गाइडलाइंस कीप ऑन चेंजिंग अ लॉट जी। प्रीवियसली जो मेडिसिन थे से अब से 8-10 साल पहले, उनमें बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स थे। स्टिल सम मेडिसिन उसमें आज भी यूज में है। मेडिसिन कॉल्ड ज़िडोवुडिन दैट कॉजेज सीवियर, लोगों में बहुत सारे लोगों में एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत करता है, दैट कैन बी मैनेज्ड, बट सेकंड थिंग इज मोर वरीसम उसमें बारे में, इट कॉजेज सप्रेशन ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, एवरीथिंग, टोटल ब्लड सप्रेशन बनना वो मेडिसिन से कम हो जाता है, बंद भी हो सकता है, पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन लगना, ये सब कॉमन चीज है। सो दिस इज वन थिंग। अदर जो मेडिसिन थे पहले कुछ, जो आपको यू विल सी आपको फेशियल डिस्टॉर्शन करना, मतलब पूरे चिक्स है जो अंदर चले जाते हैं एकदम प्रोमिनेंटली, आपका आईबॉल्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, लाइक आपके नेप ऑफ नेक, गर्दन पे एकदम बहुत ज्यादा फैट जमा होना होता है, मसल्स अनड्यू प्रोमिनेंट निकलने, लेग्स में मसल्स आपको फैट वगैरह आप सब चला जाता है। दिस इज काइंड ऑफ थिंग। प्रीवियसली जो मेडिसिन थे उसमें भी, एंड स्टिल सम प्रोटीज इनहिबिटर्स क्लास ऑफ ड्रग्स, वो उसमें ये वी कॉल इट लाइपोडिस्ट्रोफी, दैट मींस abnormal distribution of fat. So this kind of it happens there also. The other thing with the medicine, which is the backbone of the current therapy, we call it tenofovir. It is very much toxic about the kidneys and bones. And nowadays, people dying of AIDS defining illnesses, like जो पहले अलग अलग इन्फेक्शंस की वजह से जो डेथ होते थे, उससे ज्यादा एड्स एसोसिएट नॉन एड्स डिफाइनिंग जो इलनेसेस है, इनके ये कॉम्प्लिकेशन से इनसे डेथ होने ज्यादा हुआ है। सो टेनोफोविर इट कॉजेस किडनी फेलियर, दैट इज वेरी कॉमन। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ठीक है हो गया किडनी प्रॉब्लम, दैट इज मैनेजेबल, बट प्रॉब्लम यूजुअली कहाँ होती है, हमारे जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में वगैरह, वहां पे डेडिकेटेड डायलिसिस मशीन्स एचआईवी पेशेंट के लिए नहीं होते हैं। सो दिस पीपल डोंट गेट टाइमली डायलिसिस मेनी टाइम्स,
एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ पेशेंट डाइज, ये प्रॉब्लम होती है. एंड सेकंड थिंग, इट कॉजेस लॉस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी. बोन्स यूजुअली जो अपने एकदम हार्ड होते हैं, चॉक पीसेस के जैसे फ्रेजाइल हो जाते हैं, इजीली फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं. एंड वन थिंग वी कॉल अपना जो हिप जॉइंट है, थाई का जो बोन होता है, वो जब हिप में सॉकेट में बॉल में जो बढ़ता है, इसका ब्लड सप्लाई बंद कर देता है, वो कंप्रेस हो जाती है, उसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट वगैरह ये ऐसी चीजें लग सकती है. प्रोटीएज इनहिबिटर्स काइंड्स ऑफ जो एक ग्रुप है, these things they cause more cholesterol and वो the lipid like lipid abnormalities ये होते हैं. फिर नहीं, there are still new drugs coming. These are adverse effects, and but simultaneously now with considering the growing life expectancy, many people अभी उनके 60s 70s में है, 80s में भी people हैं. I think the oldest one is surviving is around 100 with HIV. मेरे पास रेफरेंस याद नहीं आ रहा मुझे, otherwise I would have quoted. अभी इनमें साइमल्टेनियसली इनमें बाकी के ड्रग्स इलनेसेस शुरू हो जाते हैं. डायबिटीज आता है, हाइपरटेंशन आता है, किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को मेंटल इलनेसेस हो सकते हैं, स्ट्रोक्स हो सकते हैं. एंड बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एनी ऑफ these medications, you must know what is not to be prescribed, and you just can't remember. मुझे भी कोई सीधा सीधा एक ऐप है, उसमें डालो ये ड्रग्स उसको पेशेंट को एचआईवी के लिए चालू है, ये मुझे मेडिसिन इस चीज के लिए ये इस्तेमाल करने हैं, वो सीधा आपको बोलेगा दिस इज ये इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन है, ये मत दो, वो मत दो, वो मत दो. सो इट बिकम, एक तो पॉलीफार्मेसी की वजह से भी प्रॉब्लम्स, तो ये ड्रग इंटरैक्शन की वजह से सबके मैनेजमेंट में आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड. एक दुश्मन है, एक आप लड़ाई कर रहे हो, एक से कर रहे हो तो एक 1:1, यू कैन हैव विन चांस गुड. बट आप साथ में 2-3, अगर एक को, अभी एक मेरा ही पेशेंट है जैसा, ही इज राइट नाउ 107 kg समथिंग, बट हैविंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी फेल्यूर, gastritis, neck fracture and all those things. So HIV का ट्रेनिंग अभी मेडिकल कॉलेजेस में आपको ज्यादा जोर देना ये इसमें इम्पोर्टेंट खुद एक्चुअली बीच में नाइको ने इग्नू के साथ में एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स भी चालू किया है. सो यू नीड मोर एम्फेसिस नाउ हियर, जेरियाट्रिक मेडिसिन एंड एचआईवी इंप्लीमेंट करना. सो बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्टेनली is much better than previously, and it's a chronic manageable like all these things. चलो ये भी अपना एक दोस्त समझ लो अपने को, ये जो मुझे तो छोड़ के जाने वाला नहीं है, मेरे साथ ही जाएगा, इसके साथ जीना सीख लो. Simultaneously, most thing, stay away from addictions, have good food, good exercise, like other all medicines के आपका illnesses के लिए, that implies here also. So you have to have a now holistic approach. That's it. कुल मिला के ये समझ में आता है कि इस बीमारी से दूर रहने में ज्यादा भलाई है, साथ में रहकर आप इसके साथ सीख सकते हैं जीना. आजकल हमारे पास इतनी अच्छी दवाएं, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप किसी भी बीमारी के साथ अपनी लॉन्जेविटी तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम इस बीमारी को पूरी तरीके से हराना चाहते हैं तो बेस्ट थिंग है कि आप इन सारी चीजों को आज डॉक्टर्स ने जितने भी हमें प्रिकॉशंस लेने को कहे हैं और जो समझदारी भरा एक जीवन जीने को सिखाया है, अगर हमारे दर्शक उस पर फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल से ये सबकी सबसे बड़ी जीत होगी. बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आज आपसे बातचीत करके. थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त हमें दिया, इतने डिटेल्ड आंसर्स हमें दिए, तो द प्लेजर वाज एक्चुअली आवर्स. एंड थैंक यू सो मच. पूरी मेडिसर्कल की टीम की ओर से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ. नमस्कार सर. थैंक यू मैम. थैंक यू.